Hello everyone, welcome to your MBBS Guide The Horizon. I am Preeti, a second year MBBS student from Kasturba Medical College, Manipal, welcoming you all on your MBBS Guide The Horizon. In this video, I'll be discussing about the syllabus of chemistry in class 12th. So let's begin our discussion. Dividing again, as per the rules, chemistry into three parts: physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. The chapters we have in physical chemistry are solid state, solution, electrochemistry, chemical kinetics and surface chemistry. Surface chemistry is just theoretical chapters. All you have to do is to read NCERT, not just in a day but one page in a day. The most easy chapter among these is the solid state. Solid state, teacher will be teaching you so much in detail like ये क्या होता है वो क्या होता है, but you don't have to do all those things. NEET में बहुत basic questions आता है solid state से, तो उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. When it comes to board, तो वहाँ पे प्रूफ आता है, तो उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है. जेई एंड मेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट नीट. नीट में बेसिक क्वेश्चंस आता है सॉलिड स्टेट से कंपैरेटिवली. व्हेन इट कम्स टू अदर टॉपिक्स लाइक सॉल्यूशन, chemical kinetics, you need to practice lot of questions in these chapters क्योंकि इसके formulas बहुत easy हैं. 10 to 15 formulas हैं. Learning formula is a cup of tea. But understanding question and solving and getting the exact answer within a time limit of one minute will be a challenge for you. To do this thing, to achieve this thing, all you have to do is you have to practice a lot. फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं. टेक आउट द क्वेश्चन बैंक एंड प्रैक्टिस ऑल दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न नहीं बदलता है, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस आते हैं. तो ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड previously. These chapters are also conceptual, so you need to wait for the teachers to explain these chapters. खुद से इसमें टॉपिक में डाइव करके एंड देन टाइम मत वेस्ट करना, समझने की कोशिश मत करना. एक बार जब टीचर एक्सप्लेन कर दे देन जस्ट गो एंड रीड, सॉल्व MCQs, दैट विल बी ईजी फॉर यू. लेकिन अगर बिना टीचर के एक्सप्लेन किए हुए तुम करते हो तो इफ़ टाइम परमिट्स यू कैन डू, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू टाइम बहुत लिमिटेड है, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. उस टाइम में यू कैन ट्राई टू कवर योर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि तुम खुद से कर सकते हो. Now talking about the last three chapters of chemistry. Last three chapters of chemistry are just like theoretical, but इससे questions sure cut आते हैं. Almost 5 questions are asked every year. लेकिन ये chapter को read करना उतना ही easy है. Like biomolecules, it's very easy. Most of the biology, like biology की बहुत सारी चीज़ें इसमें तुम्हें मिलेंगी. तो इस पे डोंट वेट फॉर द टीचर टू एक्सप्लेन, खुद से कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. लास्ट मोमेंट पे इतने इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाते नहीं हैं, तो डोंट ट्राई टू अवॉइड दीज माइनर चैप्टर्स. बोर्ड्स में भी इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मेजर क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर एंड ऑल. तो ये तुम्हें बोर्ड्स में भी हेल्प कर रहा है एंड नीट में भी हेल्प कर रहा है. तो डोंट अवॉइड दीज चैप्टर्स, क्योंकि लास्ट में जाके इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि ऐसे चैप्टर्स को पढ़ा जाए. इन क्लास 12 organic chemistry plays a vital role. Most of the organic chemistry are dealt in class 12th when it comes to haloalkanes, alkanes, aldehyde, ketone, carboxylic acid, amines. These all things are very important and NEET may go through the previous year question paper. I'll be also discussing the previous year question papers. These chapters play a very important role, so never avoid these chapters. But कितने extent तक, किस extent तक you need to remember these chapters, कितने extent तक समझना होगा, and क्या सारे chemical reactions समझने की ज़रूरत है? लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन. सबसे पहली चीज़ जो प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी वो ये कि अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म behind the reactions that are mentioned in NCERT. NCERT में जो reactions दिए हुए हैं उनके पीछे का mechanism you need to remember. But जो reactions NCERT में नहीं दिए हुए हैं, and if your teacher is teaching you those reactions, you need to remember just the name of that reaction and the product if time is permitting. If time is not permitting, then just remember the reactions that are given in NCERT and the mechanism behind those reactions. उससे ज़्यादा तभी करो जब तुम्हारा बाकी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज फर्स्ट इंश्योर योर सिलेक्शन एंड देन गो बिहाइंड द रैंक्स. पहले अपने सिलेक्शन को इंश्योर करो, एंड सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए दिस इज द प्रायोरिटी. दिस पार्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट यू विल बी डूइंग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्ट P block elements. I am telling these words for chapters except P block elements.
चैप्टर्स लाइक आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो, रिएक्शंस को याद करो, बिकॉज एग्जाम में आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वगैरह से दे विल नॉट बी आस्किंग यू द कंसेप्ट्स बिहाइंड दोज थिंग्स, दे विल जस्ट आस्किंग यू द डायरेक्ट क्वेश्चंस that should be the line from NCERT. So you can, agar if you want, you can try to remember these things. Inorganic chemistry is conceptual but mode of learning. You need to remember the concepts. So इसके लिए कोई option नहीं है. You have to follow that 3 hours strategy. Read it again and again. Revise it. The chapter that required the most revision is the inorganic chemistry. You need to revise the topics again and again, and especially class 12th topic, because class 12th में inorganic and organic chemistry बहुत vast है. Again, coming to D and F block elements, again you need to remember everything given in NCERT if you want to score good marks. इसके पीछे के भी कुछ लॉजिक्स है, बट लॉजिक से ज़्यादा एक्सेप्शन है, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोज एक्सेप्शंस. व्हेन इट कम टू पी ब्लॉक इज़ कंसेप्चुअल, फुल ऑन कंसेप्चुअल. इसमें याद करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सो यू कैन वेट फॉर योर टीचर टू स्टार्ट पी ब्लॉक एंड देन दैट विल बी टाइम सेविंग फॉर यू. Then coming to coordination compound. Coordination compound is a part of inorganic chemistry, but it's logical, it's conceptual. You can trust on your teachers and you can wait for them to start these topics. तो वैसे टॉपिक्स जो तुम्हें खुद से करना है, आई एम समराइजिंग दोज थिंग्स. जो टॉपिक्स हमें खुद से करना है वो है लास्ट 3 चैप्टर्स ऑफ द केमिस्ट्री एंड डी एंड एफ ब्लॉक, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, सॉलिड स्टेट, या and that's all. बाकी सारे चैप्टर्स में you need to wait for the teachers, you need to clear your concepts, and practice makes a man perfect. You need to practice a lot.